sunrise opportunities, energy transition, climate action, and financing of investments. तो इन सब में से सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एंड क्यों होनी चाहिए एंड व्हाई दीज थिंग्स आर द फोकस ऑफ द बजट्स अकॉर्डिंग टू यू? सी आई थिंक इनमें से सबसे मेन जो हमेशा ही पॉइंट रहता है वो रहता है डेवलपमेंट का या फिर इंफ्रा का। एक बार अगर डेवलपमेंट आ रहा है ना, उसके साथ साथ बाकी सारी की सारी चीजें अपने आप आती है। डेवलपमेंट में जैसे हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लान इज 7.5 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर। जब ऐसे करोड़ और लाख करोड़ की बात होती है, हम कई बार समझ नहीं पाते कि ये ट्यून कितना बड़ा है। इसके लिए ना आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कमेंट में आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, यूएसए का कितना है बजट का एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल। जब आप यूएसए का एक्सपेंडिचर समझोगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन यू विल रियलाइज कि ये नंबर इतना बड़ा हमें क्यों लग रहा है और ये सबसे बड़ा बजट का हाईलाइट क्यों है। अगर किसी को पता है तो ट्राई कमेंटिंग इट आउट कि यूएस का क्या है। ओके पीपल, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। यूएस का क्या है? एग्जैक्टली ज्यादा है पर ज्यादा भी नहीं है। It seems that Anand bhai is also watching the YouTube comments. मैं कुछ कमेंट्स मैंने फोन पे चला के रखे ताकि इंटरेक्शन ऐसा ना लगे थोड़ी देर बाद कि हम लोग प्रवचन दे रहे हैं। माहौल बना रहना चाहिए, सही बात है। तो इट इज समवेयर अराउंड 10 लाख करोड़ प्लस, इसके आसपास का है। और इंडिया का बजट कमिंग अराउंड 7.5 लाख करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक दिस इज द मेन हाईलाइट एंड दिस इज द मेन की। डेफिनेटली इसीलिए हमें लगता है कि जो एसेट क्लास है कि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है, उसका मेन कारण मेरे हिसाब से यही हाईलाइट हो सकती है। Even I would agree on that part, because if I'm not wrong, करीब around 35-36% of the capex के ऊपर rise दिया गया है, which definitely brings us to a good point. So basically more construction, जैसे मैं एक point इस पे मैं बताऊंगा. So for example, if good amount of investment is done into this capex thing, तो एक interesting चीज इस पे ये होती है कि this is not just going to benefit the rural people. This is also going to benefit the urbanized sectors also. कैसे? For example, FMCG companies हो गई, तो इनका बहुत सारे चीजें भी हो जाती है with गांव से काफी सारा चीजें related होता है. तो if there are proper road constructions out there, if good amount of investment is done into the infrastructure, कहीं ना कहीं ये वाली सारी चीजें speed up हो जाती है. And because of this, ultimate benefit is being passed on to various private sector companies also. Not just that, when good amount of money, I guess starting में कुछ बोला था 20,000 करोड़ या 20,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर. Yeah, so 25,000 kilometer के highway construction and all those things. So this also gives an indirect benefit in terms of employment opportunities. तो कहीं ना employment opportunities, growth into these sectors. So ये एक win-win situation है. So I would completely agree with Anand bhai on this aspect. And also, like after the pandemic, there was massive loss of jobs, right? Almost in the tunes of 10 to 20 million. So the government took a very bold step of spending in like long-term projects, and then essentially getting those jobs back into the workforce. So kudos. Yeah, and also I think a lot of people before the budget were also talking about unemployment कैसा होगा, मतलब बहुत loss हुआ है jobs का, and I did one thing very wrong, right? मतलब budget देखने के बाद I went on I think Republic or one of those NDTV TVs and channels and just kept it on. मतलब उसमें I heard a lot of people saying इतना क्यों spend कर रहे हैं भाई, थोड़ा कम spend करना चाहिए, मतलब हम लोग भरेंगे कैसे वापस, अपना deficit इतना बड़ा है and all that. But it's fine. I mean the way I see it, अगर capex expand हो रहा है और capex ज्यादा हो रहा है तो it is considered good thing for the economy. And there were a lot of fears that Fed rates hike होगा और हम लोग वापस वो मंदी वाला मार्केट में चले जाएंगे. But overall, I see this is something good for us. I mean, I'm not talking only India, right? तो इंडिया के हिसाब से I think this is very good for us. Yeah. Also, the Prime Minister. Yeah, please. No, please go ahead, sir. I think concerns are around the inflows versus the deficit जो होने वाला है. For example, inflows have reduced by 2 lakh crores. So everyone is trying to understand that if we have reduced our inflows, even after knowing that our GST is on lifetime high,
income taxes is increasing day by day, still हमारे जो net inflows है that is getting reduced. So reduction कहाँ से हुआ और कैसे हुआ वो एक क्वेश्चन था जब तक हमें वो डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर नहीं मिला था. जैसे हमें वो डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर मिला कि वी आर दिस टाइम टारगेटिंग लेस देन 1 लाख करोड़, वैसे ही समझ आ गया कि यार इसकी वजह से मेन हमारा यहाँ पे ये सरप्लस का कम था. सो आई थिंक वो इशू था कि अचानक से सरप्लस 2 लाख करोड़ से कम हो रहा है वर्सेस वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्सपेंडिचर बाय 40% ऑन कैपिटल. सो ये मिसमैच नहीं हो जाए. Correct. And Okay, while so building like these- there was a yeah, Anshuman, go ahead. I was saying while talking about this budget, one buzzword which was constantly used is Amritkal, Mission Amritkal, right? Because Independence Day last year, 75 years of independence was completed, and PM Modi said that we are planning something for the next 25 years so that in 2047, when India completes 100 years of independence, India will be the top country, right? And is budget mein a lot of capex has been gone towards long-term projects. So here एक लंबा विजन है, शायद आज नहीं होगा बट क्या पता 5-10 साल बाद बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ऑल द आउटपुट आ सके. So Exactly. मेरे हिसाब से भी capex को one should not take in the negative side because ultimately this is going to yield better returns in the future. अगर इधर उधर का कुछ expense होता that would have been wrong. So I believe that makes sense. Yeah. Okay, so like there was one estimate 9.2% GDP बढ़ाने का जो estimate दिया था उसके लिए like what do you think are the hindrances and like are you optimistic कि इतना next year GDP बढ़ I think we will surpass that number. If I am not wrong, we will easily surpass that number looking at the growth which we can see on ground. And as rightly said by many, this budget was just like Infosys ke results. They are trying to underestimate everything so that they can out-deliver. And I personally feel that we have underestimated here as well, and we can easily surpass this number. I might sound over optimistic, but I am super bullish on India, and I think India का भाव बढ़ने वाला है. Same Yeah. here. Same. So it's okay. So although all the three gentlemen over here say that they're ultra optimistic, I am optimistic. So, but in the same side, I'm a little realistic also. So a lot of people have been taking this thing as if कि, for example, इस बार divestment की बात हुई है. So divestment, I guess 60,000 crore तक की बात की गई है. Now I was wondering कि अगर सिर्फ एक LIC का IPO ही आ जाता है, मतलब तो वहां पर obviously divestment का amount उधर भी ज्यादा हो जाता. But now when I'm comparing it with the last year's budget, तो तब BPCL की बात हुई थी जो अभी तक उतना materialize हुआ नहीं है. Then there are a couple of other companies also in the lineup. If we try to add up, minimum वहीं से 1.8-1.9 लाख करोड़ तक का divestment जो ideas हैं वो निकल जाता है. So somewhere or the other, पहली चीज है there is also a possibility, although we are taking in a positive sense कि under promise over deliver का game चल रहा है, but there's another possibility that maybe this is what the realistic target is, what they can achieve. तो अगर ये वाला केस हो गया तो कहीं ना कहीं I feel that no doubt we will be growing from this place, but this might take more time as compared to what we are anticipating. Just personal view. Again, as Anand bhai gave a disclaimer, we have all the rights to be wrong. तो हो सकता है थोड़े वो हो, but this is just my view. Yeah. Guys, this entire stream has a big disclaimer that this is for all educational purposes. Do your own research and अपने financial advisor से सलाह लेके सारे investment and सारे decisions ले. We are not responsible for anything. Okay, पता so चला इसी के hashtag साथ चल गए Twitter पे. So Yeah. I think we should take a quick 30 seconds का break, and break के बाद we will like drop the first भाई मैंने giveaway YouTube वाला. प्रीमियम लिया है. I don't want ads. अच्छा. Kidding. Go ahead. So the break. So we can take a quick 30 seconds 1 minute का break and we will be right back guys. So stay tuned and आप तब तक हमारे टिकर टेप के चैनल पे टिकर टेप की एड्स देखिए. ठीक है, मिलते हैं 1 मिनट के बाद. चलो बाय. हमें भी दिख रहे हैं सबको. पापा अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे. अरे वाह,
दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ। डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। Yeah. Okay. So guys, let's start with the session again. We 30 मिनट का ब्रेक था guys. हमारी 30 एडवर्टाइजमेंट seconds. कैसे लगी ये भी 30 सेकंड सॉरी 30 सेकंड्स का ब्रेक था गाइस. हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड लेट्स मूव ऑन विद द presentation. And the second and third point that I can see is 14 sectors जो है उनको बहुत excellent response मिला है. They are incentivized किया गया उनको basically. And rupees 30 lakh crore का investment के intentions है. So what are your views upon on this? So this was from last year. So the PLI Okay. scheme was actually announced last year, and uske wajah se today the finance minister said that almost 60 lakh new jobs might be created in the long run. So yeah, it is actually doing good, and I feel that ye PLI scheme ke wajah se in the next 10 years, the number of people who are actually entering the industries where the government wants them to concentrate will increase. So for example, अगर आपको IT hardware में PLI पता हो, उसमें ऐसा है that if you are producing laptops or PCs in India, then the government will pay you 1 to 4% extra on every increase in sales. तो अगर इस साल आपका 100 रुपए का बेचा, next year 120 rupees का बेचा, government will pay you 4% extra on that 20 rupees for the next 4-5 years. So that's a massive incentive scheme, and yeah, I'm excited. I was excited even last year when this was announced. So yeah. I think that But happened Anshuman, also. A lot Anshuman, of, did you notice that there was some change when you said that last year also you noticed this thing was done? So were we able to accomplish those targets? For that, we actually have to read the economic survey, and I'm not sure if that has happened or not. But yeah, anyone who wants to read that, just go to yeah, economic not sure survey, about the stick up the economic. targets, but a few companies got. I saw a lot of companies getting the PLI scheme, taking advantage of it, but not. I don't know whether it was as close to what was promised or what can be promised. But I think this is a start for the next few years, the way I see it. But हुआ कि नहीं पता नहीं. But news पे No, देखा था, because it was definitely- I had gone through numbers, so obviously there has been improvement, but exact हमने meet नहीं किया. So anyways, it's a positive sign. And another thing is, since we are talking about the positives, I guess a lot of these things this time were around the startups also. That a lot of things would be done for them also, and specifically if I go through it, that could be a good booster to a lot of fintech this thing. So shout out to Tickertape also. Tickertape इसके लिए हमको भी giveaway दे देना. And So as Abhishek bhai mentioned कि shout out to Tickertape, the link जो जिससे giveaway मिलने वाला था, the first link is out. It's pinned comment में आपको दिख जाएगी वो link. उस पे क्लिक करो और आपको Tickertape Pro subscription मिल जाएगा. Everyone who clicks on that link in next 2 to 3 minutes will get Tickertape Pro subscription. अपने दोस्तों को जल्दी से भेजो, बताओ जो करना है करो. And we will move on with the presentation here. आप जल्दी से क्लिक करके वापस आ जाओ. तो moving on, let's move to the favorite section according to the polls, which is the taxes. So minimal tax change announced, indicating that the government might have reached a stable regime. This is the first point. The second is a surcharge. Like you can see all the points. Surcharge on non-capital tax is capped at 15%. So people exactly लोगों को पता नहीं रहता है कि surcharge क्या रहता है. So I want you all to explain एकदम बहुत ही simple भाषा में कि surcharge क्या रहता है and why capping it is a good idea or bad idea, whatever. यार इससे मैं पीड़ित हूँ. एक लाइन में बताऊंगा, टैक्स के ऊपर टैक्स ले लेते हैं. So that is surcharge. So for a very simplistic example, those people who fall above a certain bracket tax में, so after a certain bracket they have to pay additional over whatever income they are trying to make. तो ये जो होता है, सो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का ब्रैकेट एक अलग होता है, 5 करोड़ के ऊपर का एक अलग ब्रैकेट होता है. तो जब भी ये चीज पड़ती है तो वो टैक्स के ऊपर टैक्स पड़ता है, विच इज अनबियरेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. या Really, can you can you give an example कि if I'm earning 100 rupees and then
how it works for the audience, it will like बहुत अच्छे समझ यार जाएगा. एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 अभी अपन शॉर्ट नंबर पे लेते हैं और मान लेते हैं 100 कम्स इनटू द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%. ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है, वरना लोग जज कर लेंगे कि 100 में कहां से 30 पड़ गया. तो ये जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. तो 100 पे जो वो 30 Yeah. पड़ रहा है वो 30% तो जाना ही है. बट यहाँ पर अगर इंसान 1 रुपए भी 100 के ऊपर कमा लेता है, ठीक है, सो एज ऑफ नाउ देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन द टैक्स सिस्टम. वो 1 रुपए के चक्कर में पूरे 101 पे एक एडिशनल जो भी स्लैब के बेसिस पे होगा 15%, 18%, 20%, 30%, एक अलग से सरचार्ज अमाउंट फिक्स किया गया है. 1 करोड़ के ऊपर XYZ लगता है, 5 करोड़ के ऊपर XYZ लगता है. इस तरफ से कंपनीज का अलग होता है, इंडिविजुअल्स का अलग होता है, प्रोफेशनल्स का इस तरह अलग रहता है. तो ये क्या होता है कि पूरे अमाउंट में एक एडिशनल सरचार्ज देना पड़ जाता है. 1 रुपए भी बढ़ गया तो आपको पूरे अमाउंट पे सरचार्ज देना पड़ जाता है. तो अभी तक क्या हो रहा था कि ये वाली चीज एक बहुत बड़ी चीज हो जाती थी. प्लस अगर इस बजट के पर्सपेक्टिव से बात करें, ये जो बोला गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक सरचार्ज 15%, तो इसको मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, तो क्या होता था कि एज ऑफ नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स स्पेसिफिकली, चलिए इस हिसाब से बात करते हैं, स्टार्टअप्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो एक बड़ा अमाउंट, आपको वो पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो वो जब पूरा अमाउंट आप एनकैश करते हो ना, तो टैक्स और सरचार्ज में आप बहुत ज्यादा पे आउट कर देते हो, मतलब टू द गवर्नमेंट यू आर पेइंग अ लॉट. सो नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि इसको हम 15% के सरचार्ज पे या इक्विटी पे या किसी भी तरह आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी अमाउंट आपका बन रहा है उस पे हम 15% पे कैप इन कर देते हैं. बट जस्ट बिफोर दिस थिंग मैं ये बता दूं कि इसका एक आम निवेशक पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था. जो मतलब अ पर्सन हु इज जस्ट इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज इनटू द स्टॉक मार्केट फॉर द एंटायर ईयर या 10 लाख रुपीज कर रहा है, तो उस पे वो ज्यादा कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. इट्स बेसिकली फॉर दोस पीपल हु हैव हेवी सम्स इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज. ये बेसिकली हाँ इसलिए हुआ है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो लोग बहुत सा a lot of HNIs from India are constantly leaving the country because of this high taxation. So at this point, someone earning above crores, like 1 or 2 crores, might be paying as high as 42%. So the government is actually trying to control and curb the taxes they are constantly paying. Varna to, I mean, at above a certain point, a lot of people will start quitting the country, which has been happening. I'll just मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ. बेसिकली जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपका सरचार्ज पड़ता है. जो आप टैक्स पे करते हो उस पे एडिशनल पे करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, इवन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको 10% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा ऑन द टैक्स. 1 to 2 करोड़ के बीच में यू हैव टू पे सरचार्ज ऑफ 15%. 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में यू हैव टू पे अ सरचार्ज ऑफ 25%. एंड अबव 5 करोड़ यू एंड अप पेइंग सरचार्ज ऑफ 37%. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तब भी. तो ये जो 37% का मैक्सिमम सरचार्ज की रेट है, दिस विल बी रिड्यूस्ड टू 15% आफ्टर दिस. सो दिस इज गुड फॉर दोज हु आर पेइंग हाई लेवल ऑफ टैक्सेस, ताकि जो एक्चुअली टैक्स पे कर रहा है हम उसको मार नहीं रहे, हम उसको प्रमोट कर रहे. बस ये इतना सा स्टेटमेंट देना चाह रही थी गवर्नमेंट. So good for Anant and Shashank, yeah. And also it's a good cause and effect, right? I think we'll see a lot of people now investing more, I mean, a lot of HNIs participating more in these different avenues apart from the previous ones they used to always do, right? And now you don't have to go find someone sitting in Singapore or find someone sitting in Mauritius. You can find someone sitting in India and he's still capped at the same thing, so it's better for that. So yeah, good for HNI kind of individuals who are investing in startups or IPOs or any unlisted activities as well. Yeah, so in the chat people seem happy कि उनको 3 महीने का टिकरटेप का प्रो सब्सक्रिप्शन मिला है. So guys, 3 महीने का सबको मिलेगा, but there will be few lucky winners, ऐसे 10-20 people जिनको साल भर का मिलेगा, and we'll also give away Amazon gift voucher as we have promised. And इसी के साथ we have crossed our 1000 का watching. It is like really great considering this is the first ever live stream on this channel. So thank you guys. आप लोग नहीं होते तो ये possible नहीं होता, and thank you audience यहाँ आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए. एंड नाउ कीमती से आगे बढ़ते हैं. जो कीमती चीजें रहती है वो आजकल बहुत ही ज्यादा डिजिटल होने लग गई है, एंड उन्हीं में से एक कीमती चीज को NFT ऐसा बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल NFT होता क्या है, एंड NFT पे टैक्सेस कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, और लाइक वी आर लाइक देयर वाज वन वेरी कंट्रोवर्शियल, आई हैव सीन द मीम्स की प्रॉफिट होगा तो भी लेंगे एंड लॉस होगा तो फिर वो काउंट नहीं करेंगे. लाइक कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू आवर ऑडियंस?
अभिषेक, गो फॉर इट। यार देखो, पहली चीज है कि एक 30% का वो लगाया गया है, बट while I was going through the minutes, it says that the 30% tax would be applicable to the gains transfer के basis पे on the digital assets. They have never used this term. ना उनने NFT बोला है, ना crypto बोला है, ना कुछ. They have so far not specified anything, but digital assets. Now going ahead, even if I assume that somewhere indirectly it is targeting cryptos, तो इसके लिए I see a lot of people getting disappointed, but I feel it is a good step in that direction. क्यों? Because this also clearly states that the government has realized कि crypto is here to stay. अब government भी इस चीज को accept कर रही है. So now going ahead, even government wants to encash on the profitability which people are creating in this space. It could be NFT going ahead, जो metaverse का concept आ रहा है उस पे, NFT किसी भी चीज पे. तो मेरे हिसाब से ये चीज इतनी बुरी नहीं है. नाउ सम पीपल आर गेटिंग आउटरेजियसली और 30% लगा दिया. तो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंपेयर टू ऑल द एसेट क्लासेस, व्हेन यू आर लुकिंग इनटू द गेम्स आल्सो, क्रिप्टोस in terms of volatility as well as returns is of course going to give you a decently more profits as compared to other asset classes. तो सीन क्या हो रहा है, जहां पर इक्विटी में आप साल भर का 20% देखते हो, क्रिप्टोज में काफी सारे ऐसे लोग हैं, we know a lot of examples who have turned 200%, 300%, even much more than that, like unimaginable kind of money. तो वो उस चीज से अगर वो एक 30% दे देते हैं, प्लस एक जो 1% का TDS निकला है, तो मेरे हिसाब से that's not a bad thing. In fact, we should consider this thing as a welcome step by the government, that now they have seriously started considering digital assets as something really important and something which is here to stay. Yeah. But Abhishek, either there's a question. Let's say someone is making 200% returns. ठीक है? 30% of 200% returns It's more. is way more than 15% of 20% returns. So actual में crypto investor या जो भी digital assets का investor है, उसका तो बहुत बड़ा loss हो रहा है. यार Yes. अभी इस पे the only thing which I would say is, for even the government, this is the first time when they are going to test the waters at this point of time. Going ahead, they might do a bit of permutation and combination over there. So मैं सिर्फ इसको एक तरीके से ले रहा हूँ कि चलो कुछ बात हुई इस बार. Going ahead, maybe by the next budget, when they see the growing number of transactions, they might reduce it down to let's say 15%, 20%. ये शायद मेरे को लगता है government for the first time they are trying to test the waters with this kind of thing. That's Also, I also agree with Abhishek. Abhishek भाई, best point is at least उन्होंने accept किया है कि ऐसी कोई करेंसी है. I think बस दिक्कत इतनी सी है, if you are investing 1 crore रुपए, आपको 3 करोड़ हो जाते हैं, आप 2 करोड़ पे 30% टैक्स लेते हो, आई एम ओके विद इट. बट अगर कोई छोटा इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आई थिंक कुछ एक एग्जेम्पशन लिमिट होनी चाहिए थी, ताकि अभी हुआ क्या है कि ऑफ लेटली हर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का शौक है. रिटेलर्स या फिर आम आदमी या फिर मिडिल क्लास लोग अब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे उन्होंने क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे भी टैक्सेशन आ गया. टैक्सेशन से फिर भी दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ दे देते हैं. अरे यही तो मास्टर स्ट्रोक है, डेफिसिट इसी से घटाएगी गवर्नमेंट. I'll tell you what, I mean, वैसे देखा जाए तो आप STT ले रहे हो, STT के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले रहे हो, जो ऑलरेडी हमारे काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन हो गया है. फिर आपने हमारी स्लैब रेट वैसे भी कम नहीं करी, स्लैब रेट छोड़ी, आपने रिडक्शन को प्रमोट नहीं किया, अब क्रिप्टो में भी आपने टैक्स ले लिया, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी. प्लस इन्फ्लेशन से चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं. यार तो इस पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स पार्ट ना, ऑनेस्टली अगर ओवरऑल टैक्स पार्ट पे देखे तो दिस बजट आई एम नॉट हैप्पी. मतलब इतना हैप्पी नहीं हूँ ओवरऑल देखो जाओ, बिकॉज एनीवेज प्रॉब्लम क्या हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और डिस्पोजेबल इनकम बच नहीं रही है. ठीक है, तो पॉइंट है कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है. पॉइंट वही हो रहा है कि जो बंदा 50,000 रुपए महीने का कमाता है, उसका खर्चा पानी, इन्फ्लेशन और ये सब करने के बाद भी उसके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बचेगी, तो प्रॉब्लम इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी, और कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो एट द एंड हमारा उतना ग्रोथ कहाँ से वो हम अचीव कर पाएंगे. तो टैक्स सिस्टम में इस तरह तो मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन अच्छा बोलना पड़ता है. नहीं, वेरी वेरी ट्रू अभिषेक भाई. आई ऑल्सो फील कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इट वाज अ वेरी गुड बजट, ग्रोथ बजट जिसको हम कहना चाह रहे थे, बिल्कुल है. पर आम आदमी के लिए या फिर मिडिल क्लास के लिए बोला जाए तो आई फील यहाँ पे कुछ भी रिलीफ ऐसा कुछ मिला नहीं. मतलब कोई पर्पस नहीं है कि हम मिडिल क्लास का कोई आदमी या नॉर्मल रिटेलर सोचे कि चलो मुझे ये मिला डायरेक्ट, कुछ भी नहीं मिला. अगर आप देखो सरचार्ज वाली भी चीज है, सरचार्ज वाली चीज है, इज इट रियली गोइंग टू हेल्प द रिटेल पीपल? नहीं. इवन इफ यू लुक फ्रॉम, ठीक है कैपेक्स वाला हेल्प करेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और वो वाली चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो शायद HNIs के लिए ज्यादा हेल्पफुल है rather than a normal person, but budget is good. Yeah, also एक और चीज है ना, So- मतलब if you've looked at the past, हाँ. 2016 में at that point I was very actively trading in that crypto world, right? मैंने वो टाइम पे खरीद लिया था, 17 में आके blanket ban हो गया था. So then you remove everything out, crypto companies only had disappeared at that point from India, and then the RBI overturned that rule, and then they came back again. Now it has come to a point of acceptance, but it's not a very sweet, स्वागत करो वाला acceptance, right? वो थोड़ा hesitation, अभी तक जान पहचान उतना हुआ नहीं है. So I think 30% is, as Abhishek said, it's a starting point. But it's a good starting point because now अभी क्या होगा, मतलब बहुत education आएगा space पे, because see, it is very very volatile. It's fallen almost 30-40% in the last few weeks. Lot of scams also happen in the same space. So अभी education बहुत जरूरी है. And if you're saying retail investors are getting in or middle class is getting into this, बहुत मुश्किल है. I mean, it is a very dangerous But Shashank, game. don't you think at least set off of losses must be allowed? मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया. No, 100%. I mean, 30% is definitely high. And as I said, अभी तक वो start हुआ है. I don't think they also fully aware. If you look at US, अभी उन लोग DeFi या NFTs, rebases, सब पे tax मार रहे हैं, right? Now they have gone 3-4 steps ahead, and we are just starting. So I think, yeah, eventually, I don't think they're trying to make it accommodative कि थोड़ा offset करेंगे, वो ऐसा कुछ है नहीं. They don't want you to do it. पूरी क्लैरिटी भी नहीं आई है इस चीज पे, मतलब we are still waiting and all that. It's still new, right? So like in 2018's budget, when LTCG was announced on equity, everyone knew 31st March तक time है, उसके बाद everything will come into effect. In today's budget, it was a couple of lines that were used, and then we just moved on to the next point. And it is something which affects a lot of investors. So yeah, we need more clarity. It appeared as if the finance minister was given a target this time कि देखो 90 minutes है तुम्हारे पास. You just need to wind it up in this period. मतलब for the first time, truly appreciable that sum it up. Yeah. So like there was like quite a lot of uncertainty कि taxes होंगे नहीं होंगे, but एक चीज certain है दोस्तों, वो है कि इस स्ट्रीम पे आपको टिकरटेप प्रो मिलना 3 महीने का सब्सक्रिप्शन तो सबको मिलने वाला है. इसके साथ साथ ही आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है एंड Amazon वाउचर्स भी मिल सकते हैं. तो stay tuned. And like I had one question for you guys कि आप में से like who is happy with the budget and who is not happy with the budget? Clearly, like if you can tell. We'll go with neutral. first. I mean, okay, yeah, Abhishek. Okay, happy. So I'm happy on few aspects. First is the kind of this thing startups को जिस तरह का तवज्जो दिया गया है इस चीज पे, उस चीज पे I'm happy. Capex के जगह पर I am happy. And a few things which are of course in our favor in the terms of surcharge and everything, उन areas पे I am happy with my personal biases. But अनहैप्पी किस चीज में, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई सेड ऑल द पीपल आर सेइंग कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी की बात है, बट डाइवेस्टमेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 1 लाख करोड़ तो बोल दो यार, बट डाइवेस्टमेंट पार्ट दैट वाज मिसिंग आउट देयर. सेकंड इज एज आई जस्ट मेंशन राइट नाउ कि एक आम इंसान के लिए टैक्स रिलेटेड चीजों में ज्यादा कुछ इस पे फायदा मुझे दिख नहीं रहा है एज ऑफ नाउ. गोइंग अहेड देयर माइट बी दिस थिंग. थर्ड इज although a lot of people are considering these things to be very good and all those things, like जो किसान ड्रोन वाली चीज के बारे में बात करी गई एंड कुछ चीजों के बारे में बात करी, which on the front face looks very exciting, है ना, कि भाई एग्री टेक बोलते हैं इसको कि बहुत शानदार चीजें होंगी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ इजीली आवर फार्मर्स आर गोइंग टू पिक अप. अर्बन एरिया में लोग ड्रोन ढंग से अभी उड़ा नहीं पा रहे हैं. सो कंसिडरिंग दैट आवर फार्मर्स विल गेट वेल इक्विप्ड डूइंग दिस थिंग विद नो ऑफेंस टू एनीवन, वो वहां पर कैसे एग्जीक्यूट होगा वो चीज है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बजट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज अ ब्लूप्रिंट. ये तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ये चीजें करेंगे. नाउ एट द एंड एग्जीक्यूशन में कैसे क्या होता है, दैट इज अ बिग दिस थिंग. सो ऑल्दो आनंद भाई इज अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस बजट, आई एम पार्ट ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एक्सपेक्टेड. और एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फ्यू की एरियाज अराउंड क्रूड के अराउंड और थोड़ा ज्यादा पॉइंटर्स के, बिकॉज आप देखो अप्रैल से सितंबर के बीच में द क्रूड वाज अराउंड $65-75 के आसपास, अचानक से $80-90 पे चले गए, $80-90 पे चले गए. नाउ विद दिस ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वहां पर और भी थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़े हुए हैं. कहीं ना कहीं दिस एक्चुअली गेट्स पास्ड ऑन टू द नॉर्मल आम जनता, आम पीपल. तो इस पे भी अगर दे कुड हैव गॉटन सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आउट देयर तो वो और थोड़ा अच्छा रहता. तो आई एम लाइक ठीक है, अच्छा है, बट और अच्छा हो सकता था.
So like let's ask the people जो हमारी stream देख रहे हैं. I'll just create one poll कि are you happy with the budget? Let's see जनता क्या कहती है. And like and we can move forward. We'll come back to this थोड़ी देर में जनता का जवाब. And the next part of the budget was duties on industries. So यहाँ पे import duty on certain chemicals कट की जा रही है, and then like import duty on polished diamonds and gemstones भी कट कर रहे हैं 5% से, and जो swan diamond होता है उस पे तो like they have said कि we won't have any like taxes like import duty. So like what's your take on this? Like इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं तो biggest benefit is my wife was very happy. so a happy wife is a happy life. I like Anand के लिए like this proverb like is true. So like there's also one another point that was made. It was like आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो जो percentage of the percentage of the manufacturing, I think it was right, जो manufacturing का ये था वो उसका like it was like increased to some 68% from it was last year some one second. I'm not able to remember. डिफेंस इंक्रीज हुआ था. डिफेंस का जो प्रोक्योरमेंट बजट था that was increased from 58% to 68%. 68%, yeah. That was pertaining to defense, I think. Yeah, But I it guess was for the defense. I guess manufacturing पे कुछ नहीं बोला गया ना ज्यादा इस बार. That was mainly related to defense. हाँ, तो this was another disappointment for me. Manufacturing पे भी नहीं बोला गया है. चाइना उधर अपना अलग वहाँ पर वो बना के बैठा हुआ है. नहीं, अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ. नहीं, I am personally bullish on this budget from India perspective, and I didn't like it from middleman perspective या फिर middle class के perspective से. कुछ था नहीं जहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो देते. मतलब हम लोग मिडिल क्लास से अगर क्वांटम ऑफ टैक्स की बात करें तो बहुत अच्छा आता है ऑलरेडी. जीएसटी ऑलरेडी हमें लाइफ टाइम हाई पे पहुंच रहे हैं हम लोग. सो थोड़ी रिलीफ मिल जाती तो थोड़ा बेटर होता. एंड डिड यू नोटिस लाइक हमारे इसमें इवन कॉर्पोरेट्स आफ्टर दिस कॉर्पोरेट टैक्स वाला जो आया था 26% का a few years back, अचानक से वी हैव सीन द काइंड ऑफ टैक्स व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग. तो मुझे क्या लगता था कि even if some minute relief on the common जनता like आनंद भाई सिंह वहां पर थोड़ा सा होता ना, गवर्नमेंट budget would have been 11 on 10. Absolute. और पक्के से जो लास्ट ईयर हुआ था ना वो 4% वाला मूव इन द इंडेक्स वो आराम से होता वहां वाली चीज पे, बिकॉज तब तो क्या पता ऊपर मतलब सर्किट वर्किट लग जाता है उस केस पे, बिकॉज देन द काइंड ऑफ हैप्पीनेस पीपल वुड बी हैविंग, तो वो अलग लेवल का होता वो वाली चीज पे. शशांक, आप भी शायद लास्ट ईयर ट्रेड करोगे. आपका क्या एक्सपीरियंस है सेम सिनेरियो पे? शशांक, I mean last year I saw Bank Nifty flying to another level and today I saw everything was flying and then वो एक 30 minute gap में I think budget होने के बाद थोड़ा break लेके फट करके गिरा and I said oh shit okay cool nice interest. So I mean as you guys mentioned right, मतलब इतना great नहीं था but इतना बुरा भी नहीं था. Now the people who are thinking in a negative way कि चलो ठीक है बुरा तो नहीं था right, ऐसा कि नहीं कि बॉम्ब फोड़ दिया. And if you look at Twitter, अभी जो ट्रेंड हो रहा है that's basically 30% tax is trending. So for आम जनता as you mentioned, even though there was nothing great for them, the only thing that was a standout thing for them was the cryptocurrency tax. और सब उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अभी 30% बढ़ना पड़ेगा right. So नहीं, प्रॉफिट होगा तो बढ़ना पड़ेगा. अभी के मार्केट में न्यू इन्वेस्टर्स को होगा भी नहीं, बाकी प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, which is a big number. But problem ये हो रही है, a lot of people have invested like 10,000, 15,000 in crypto. तो वो उनको it's a logical decision to give them rebate. तो I guess अब इस बजट में तो नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट बजट तक अगर इसमें भी कुछ स्लैब स्ट्रक्चर भी अगर उस टाइप से कर ले कि आफ्टर दिस नंबर ऑफ गेन अगर इस तरह का परसेंटेज लगे, देन इट मेक्स सेंस. बट एज वी थॉट कि अभी तो कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट एक पहला स्टेप है.
and then let's look into it. But Yeah. it looked like ये budget में मतलब for the HNIs and for the ultra rich category they'll be very happy and celebrating, right? That is very 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 clear. And middle class, nothing's changed, so that's positive for us. Nothing negatives come, but nothing positives come, so we'll wait a little more. India is growing as a whole, so that's a positive. Like Yeah, one thing. so guys, it's time for a break because I have got मुझे break लेना पड़ेगा guys. मेरी मजबूरी समझिए आप. And we will be back in 30 to 60 seconds. And तब तब तक तक के लिए टिकट का आप लिंक देख enjoy लीजिए. कीजिए. हाँ, and when we will be back, we will drop the Tickertape Pro का second link, the second giveaway that we are going to drop. गिवअवेज करने का टाइम आ गया है. हाँ, giveaways करने का टाइम आ गया, तो हम आते हैं कुछ ही सेकंड में. पापा अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. बेटा तैयार हो जाओ. देखो ना, फीवर है. ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. पापा अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. बेटा तैयार हो जाओ. देखो ना, फीवर है. ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. आप सभी का स्वागत है. होप यू आर डूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स वेल. एंड जनता का ये आ गया है, जनता का क्या वोट आ गए हैं. आई एम एंडिंग द पोल एंड यू कैन सी द 62% ऑफ जनता इज नॉट हैप्पी विद द बजट. एंड we will discuss more in detail about the budget. पर उसके पहले there's some gift which I am dropping in the comment section and it's now जा चुका है वो. So Tickertape Pro सब्सक्रिप्शन के लिए उस लिंक पे क्लिक करें एंड आपको मिल जाएगा. एंड तब तक के लिए I have also pinned it. एंड उसके बाद let's move on to the next important sector, which is the agri sector. So these are the few points and I want to know कि what's your take on the agricultural sector. Like अभी mention किया कि like Abhishek mentioned drones उड़ेंगे, drones को control करना है. But how capable are the farmers or how capable our technology is to make that happen is the question. And what do you feel about it? I think so. I saw this recently, right? I think Sequoia Capital, which is a VC firm, came out with this. Matrix recently came out with this, and they said हम लोग अभी agri tech पे heavy investing करने वाले for the next 2-3 years. And what I can see is, now I don't know whether it'll work or not, but a lot of startups are now entering agri tech space, जिसमें ये drone उड़ाएंगे, जिसमें IoT डालेंगे, drip irrigation, all controlled, automatic, everything, with education of agriculture farmers, right? Now, I don't know if they're catering to the smart agri farmers or the rural villages agri farmers, because there is massive difference in both. But there are a lot of startups coming in this space. So startup ke through enablement hona chahiye, and I think that is what is happening. But again, it's, I mean, if you look at the ratio with our farmers that are there in India that needs to be educated in emerging technology versus smart farmers, obviously the farmers that need to be educated is a massive pie. And we are obviously lacking behind with respect of using technology like other countries, right? If you look at developed countries, they're using insane amount of technology to grow their crops. So I think we are, again, as I would say, this is, I feel that this is a very next 2-3 years wala
thing, and I'm happy that the government is thinking about stuff like, okay, drones and at least what direction mein soch raha hai. And we're not 5 years behind on US, I would say. I think maybe 1 or 2 years behind, but still it's very close. So from that side, I see it in a positive. But again, also, like, government had to actually make a statement that we care about farmers after the last 2 years where pura farm bill wala pura controversy. There have been protests throughout the last 2 years. So the government had to show that you guys are extremely important and we are doing things for your future. So that's why that MSP wala bhi jo 2.37 lakh crores hai, that was highlighted. And apart from that, drones and everything. So, but I think they always do that. I've never seen them not doing that. I mean, yeah, Shashank, obviously, because देखो जब थोड़ा होता है ना pre election type का, not trying to get into that zone, so होता है कभी-कभार you have to use certain words any quite often. government, but I think it's a very small step. ये एसेट को इतना बड़ा स्टेप नहीं था कि जिसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन फोकस था. एग्रीकल्चर के लिए सच बोला जाए तो ज्यादा कुछ दिया नहीं है इस बजट में. यार मतलब पॉपुलिस्टिक बजट नहीं है ये. हाँ, intent is good, intent is good, but not that big कि हमें बहुत बड़ा impact आ जाएगा immediately. I don't think it's a big impact thing. It's a small thing. It is okay. Like for a farmer sitting in a village watching TV, excited about budget and what will happen to us, and what is the perks we get, and what drone usko what is drone? I don't know what is drone, right? So usko pata nahi rahega. So yeah. Like you can, like, in short, you can say India is investing in agriculture heavily because they believe in Indian agricultural growth. But if you want to invest, you can use the mutual fund screener of Tickertape and invest in the most, like, अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग होता है ना, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर दो या एफडी में कर दो. तो म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर आ चुका है दोस्तों. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. जाओ, ऐप डाउनलोड करो, और प्रो तो हम दे ही रहे हैं, एंड देन यूज इट. म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाओ, एंड लाइक, एंड दिस इज नॉट a investment advice. Please consult your financial advisor. Just giving a disclaimer. Also, Anant, tell me one thing. आप यहाँ तो हो ही, साथ ही साथ आप YouTube के कमेंट सेक्शन में इतने एक्टिव कैसे हो? I want to know that before we move on. नहीं, अब क्या हो गया है, मार्केट में रहते ना, तो मल्टीटास्किंग इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू. अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे तो आप मार्केट पे फोकस नहीं कर सकते. और टिकरटेप प्रो कैसे जीतेंगे? हाँ, या टिकरटेप प्रो कैसे जीतेंगे? नहीं, ऐसा कुछ है क्या? कमेंट करने से टिकरटेप प्रो मिलने वाला है क्या? अरे क्या पता, हो सकता है, आई डोंट नो. अच्छा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. शशांक ने अचानक नीचे से दूसरा फोन निकाल लिया है. अच्छा, ये भी. Okay guys, let's move on to the next industry, like next part of the presentation, which is housing and urban planning. तो आवास योजना में 48,000 करोड़ रुपए allocate हुए हैं, and गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रही है in urban areas. Like it's a kind of a personal question. Do you prefer traveling by public transport or do you prefer your own vehicle? क्या प्रेफर करते हो आप? कोविड सिचुएशन में ऑब्वियसली अभी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज आल्सो गुड. मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, स्पेशली अगर हम ट्रेन्स की बात करें स्पेसिफिकली. आई थिंक ट्रेन की कनेक्टिविटी इन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे. सो डोंट यू फील लाइक compared to other cities, India थोड़ा पीछे है in terms of the public transport? क्योंकि like I have seen and heard lot of cases की public transport कितना unhygienic है और कितना like बहुत repairing की जरूरत है, फिर भी repair नहीं हो रहा है, वो चलाए जा रहे हैं and सीटें निकल रही है यार. But the thing is, things have actually improved and Indian government has found their own hacks. For example, toilet में आजकल मग में ना चेन लगा रहता है ट्रेन, so that no one can actually steal it out. Then चाय लोग कप फेंकते थे, so what they have decided is कि मड वाले, वो मट्टी का जो कप होगा ना, वो बहुत सारे स्टेशन में मट्टी वाला कप है, फेंक दो, उसके बाद नीचे ही जाना है, धरती में माटी में मिल जाना है सब कुछ, that kind of thing. So somewhere or the other things have been taken care in that direction. And what you were saying is
if you would have traveled into trains and all these things now almost a decade back, a lot of things have actually slowly changed. We also need to consider the amount of the kind of population we are having. तो एक बार में सबको monitor करना इतना आसान नहीं होता. And talking about public transport, so now if you go to places like Delhi, तो Delhi में जो metro चलते हैं, so they are actually really good in terms of traveling and commuting. And even local मुंबई की बात करो, I'm not talking about दादर वाली, बाकी जो थोड़ी बहुत locals की बात करो, so they उनका भी जो quality है compared to a decade back has enhanced, has improved. इतना भी बुरा नहीं है और time लगेगा यार, इंडिया में हर चीज को time and it's लगता so है. more convenient, like the local train is so more convenient. इतना population है रास्ते में, you have no option but to Absolutely. take the trains if you want to make somewhere in time. Secondly, Absolutely. example देता है, तेजस एक्सप्रेस बोल के बॉम्बे टू गोवा एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेन निकली थी, जिसमें टीवी था, हेडफोन्स था, सब कुछ था. एक हफ्ते बाद कंप्लेंट्स आ रही है कि लोग हेडफोन्स चुरा के लेके जा रहे हैं. उसके बाद गवर्नमेंट, मतलब जब 130 करोड़ लोग होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, एज अभिषेक राइटली सेड कि कौन कैसा बिहेव करेगा. We cannot control it, but the government has been constantly trying. So there's this thing called BRTS. At least that's what Bus Rapid Transport System. It's in Ahmedabad, and it's so streamlined. Everything is so organized. और जितना time लगता है उतने time में पहुंचते हैं. तो we are increasing, like we are improving definitely. Interesting insight. I didn't know about this. Yeah. Yeah. You should check out BRTS. Okay, so like let's take one question जो हमको गिव अवे के जो फॉर्म्स भरे थे उसमें से आया था. तो this is from Akhil Neelam from Hyderabad, and he wants to know that sectors like अभी बजट आ गया है, sectors that may grow with latest budgetary provisions is his question. So Yeah, what do you think? मेरे हिसाब से infrastructure would be one sector which would benefit out of it, and anything related to infrastructure. It could be cement space, it could be anything of that sort, because कहीं ना कहीं इस पूरे बजट को अगर मैं देखता हूँ तो one of the major highlights is the government is going to spend on highways, they are going to spend on infra, they are going to spend indirectly कहीं ना कहीं infra का बहुत mentioning है. तो I feel infrastructure would be one space which one should look up for. इंफ्रा इज इंटरेस्टिंग, जैसे अभिषेक ने ऑलरेडी कहा. इसके साथ साथ इवन बीएफएसआई स्पेशली बैंकिंग के अच्छे स्टॉक्स कैन बी इन फोकस, बिकॉज अभी इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, इफ वी कंपेयर लास्ट 5 ईयर डेटा, स्पेशली इफ वी कंपेयर पोस्ट कोविड, वी वर एट 3 डेकेड्स लो इन क्रेडिट ग्रोथ. अगर हम उस साइकिल को देखें तो अगर वो थोड़ी सी भी इंप्रूव होती है, सो रिजल्ट्स कैन बी मैसिव. इंडिया की इकोनॉमी को हम रफ फिगर में बॉल पार्क फिगर ले रहा हूं अभी जस्ट फॉर क्लैरिटी, 2 लाख करोड़ की इंडिया की जीडीपी है, डेट का फिगर है 330 लाख करोड़, रफली हम 1.5x बोल सकते हैं. मतलब ये कि अगर मेरी जीडीपी 10% से ग्रो कर रही है, दैट इज 20 लाख करोड़. 2 लाख करोड़ मेरी 20,000 करोड़ है, 2 लाख करोड़ की टोटल जीडीपी है, 10% इज 20,000 करोड़, तो मेरा डेट ग्रो होना चाहिए 150% से, दैट इज 30 लाख करोड़. अभी वो ग्रो हो रहा है 15 से 20 लाख करोड़ इन लास्ट 5-10 ईयर्स. सो अगर ये सिचुएशन थोड़ी भी इंप्रूव होती है, आई थिंक ये जो क्रेडिट ग्रोथ की डिप्रूव होने की साइकिल थी, इट कैन बॉटम आउट समवेयर इन 2022-23 एट मैक्स, एंड पोस्ट दैट बैंकिंग सेक्टर कैन एज अ होल और मे बी बीएफएसआई एज अ होल कैन बाउंस बैक. सो दिस कैन बी इंटरेस्टिंग प्ले. इंफ्रा ऑब्वियसली इज इन फोकस, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो आपकी इंफ्रा रिलेटेड कोई डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनीज हो, या फिर इवन पाइप की कंपनीज क्यों ना हो. सो दैट विल बी इन फोकस एज राइटली पॉइंटेड बाय अभिषेक भाई. These are like some really great insights from Anand sir, and इसी ऐसे ही great insights हमारे टिकरटेप के blog पे भी मिलते हैं. So you can like check the link in the description, आपको link मिल जाएगी. And the question जिन्होंने पूछा था अखिल नीलम, congratulations, you have won 500 rupees Amazon gift voucher. आपको वो mail कर दिया जाएगा because I have your mail, and after this stream you will get an email from Tickertape saying that congratulations, you have got 500 का Amazon gift voucher. So let's move on to the next sector, which is the like most जिसके बारे में बहुत ज्यादा buzz हो रही थी, and it is the electric vehicle sectors. So ये battery swap policy क्या है? This is like I want to know क्या है and कैसे इससे फायदा होगा इंडिया को, या एक जनरल आदमी को, एक जनरल पर्सन को कैसे फायदा हो सकता है? आई थिंक शशांक ने इसके ऊपर कुछ रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.
So I'm not sure about battery swapping, but I'm very bullish on the electric vehicle segment in coming into India, because I think I mean, if you look at Tata Nexon's sales and if you look at how Tata is selling their EV space, I think बहुत अच्छा होने वाला है, and I think this is the next big emerging sector in the next 5 years. I would not say 1-2 years. ये time लगेगा to set up all the charging stations. Your Lota and chain concept वो इधर भी होगा, because remote village पे if you put a charging station उठा के लेके गया तो क्या होगा, right? So a lot of edge cases to think about it. And also, if you see, Indian government is actively talking to Elon Musk and trying to get him into India, but they're trying to reduce the import duties for him, which I don't know what will happen there also. So, matlab, it's inevitable. Ye hona hi hai. Few years later, I think everyone will shift to EV, looking at the oil prices going up. It's not affordable at all. But infrastructure jab set ho jayega, I think everyone will move towards this. And you already see charging stations in people's houses right now. Yeah. And battery is the most important when it comes to electric vehicle segment, right? Elon Musk ne tod diya udhar, so that he's done some crazy innovation and got that. That's why you see in India, a lot of people are moving into that lithium ion battery and trying to like actually take up this entire battery space. And we saw Reliance also talking about not entering the electric vehicle, but the battery provider space. So a lot of things are happening. And if someone can nail the battery, and we already see massive adoption happening in two-wheeler segment. If you look at Ather Energy, yeah. Hero Motorcorp, I mean, literally buying completely slowly, but slowly buying them out. वो भी चल रहा है उधर. So I think battery is one of the biggest plays that will happen. And in India, if you see the current listed companies in the battery space, I'm not going to name them, but they're not doing anything really great as of now, right? They're investing in massive manufacturing plants. They are working towards lithium-ion battery technology, but I don't think they've cracked it yet, and they're still waiting to crack. But the minute someone cracks it, and they're also doing a lot of tie-up with foreign firms to crack this battery equipment game. So the minute that happens, they'll start booming, and we'll see a massive boom in the thing. I think EV, I think maybe not this budget, but in the next few budgets, it'll start becoming a very big thing. Also, like the government with their FAME scheme, which is faster adoption of manufacturing electric vehicles, they have almost promised like 10,000 crores, जो अलग-अलग subsidies or incentives में देंगे. Subsidies to car owners and incentives to manufacturers to come and produce different parts and supply chain of EV. So definitely very exciting. Hero Corp ने तो बोल दिया 2027 तक we will definitely stop gasoline powered two-wheelers. So that's very exciting. So yeah. So like according to you, like Tesla to like Elon Musk का कर जगह में शशांक already mentioned, India में existing companies में किसी को like direct टक्कर देनी है तो who will you nominate? आपको एक-एक कंपनी nominate करनी है अपने तरफ से. Who is going to be it? Tata Motor बोल देता हूँ मैं पहले से. हाँ. I was about to say that. Tata is the only one who's overall in a good way. पर एक थोड़ा सा एक conflicting view है जो पॉपुलर ओपिनियन से थोड़ा डिफरेंट होता है. जितनी मेरी स्टडी कहती है, लिमिटेड ओपिनियन है मेरी, जब भी कोई थीम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थीम, दैट थीम अंडर परफॉर्म्स फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इमीडिएटली. सो ऐसा कुछ ईवी के साथ नहीं हो जाए इज माय ओनली बिग कंसर्न, बिकॉज ऑफ लेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड ईवीज एंड एवरीवन इज बुलिश ऑन ईवी एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ईवी. सो दिस इज जस्ट अ कॉशियस पॉइंट एंड गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू ऑल द व्यूअर्स, just to be on a safer side that you look at the picture in a holistic view. And in that case, I guess Shashank added a right point that immediately we're not actually going to see the results. Yes, because if you remember 2009 में the burning topic was telecom and all those things. And उस time पे Bharti, Idea, I think BSNL, MTNL and all these things were buzzing. उसके बाद for the next 10-11 years they didn't perform at all. सिर्फ भारती उसमें से थोड़ा बहुत बचा which recovered, but CAGR भी 3.5% पे निकल रहा था उस हिसाब से. तो you have a valid point. It might not immediately start performing because a lot of things have been factored in, but going ahead positive ही है. I mean, if you look at any sector, right, government has to help. There's no other option, right? अगर help नहीं किया तो चलेगा ही नहीं. Even if EV comes and everyone adopts, but there is no incentives for helping that, whether it's the back-end manufacturing department or whether it's the retail investors getting benefits. Even if you look at energy, kitna time tak energy sector suffered, right? There were big companies, number 2 in the world, suffering and becoming a penny stock, right? And now there is massive push on energy. So it all, even telecom, even the AGR, what time tak there was not a very, what do you call that, safe environment for global players to come and play. And now it has changed. Slowly it's changing.
So hopefully that does not happen with EV, and it's a very good, easy playing field and adoption-led playing field. That's why I said it's 4, 5, 6 years down the line, because infrastructure is massive in this space. Setting up charging station in remote villages, because they don't have long life, right? मेरे को अगर Bombay to Delhi करना है तो बहुत मुश्किल है boss, to do it in electric vehicle. And it has to be in remote villages on the way in through Gujarat. There should be some place. And the biggest challenge is, so far, even around every 5 kilometers on highways and all those things, हमारे पास CNG और petrol की station नहीं है. तो setting up EV stations out there, it would be a task in itself. So if government subsidizes and does a lot of those things, तो वो हो सकता है, but it will definitely take a few years. And अभी अगर आप पूछोगे तो टाटा मोटर्स इज द क्लियर विनर, बट अभी इंडिया का बिगेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी ने बोला है कि अभी इट्स टू एक्सपेंसिव, हम घुसेंगे ही नहीं, ठीक है. बट एज सून एज समवन कम्स अप विद द टेक्नोलॉजी which decreases the price, so the cheapest EV right now is I think Tata Tiago for 12 lakhs. 12 लाख रुपए की कार इंडिया में cannot be a normal household affair. Maruti will launch a car by the name Maruti Suzuki 800. हाँ, तो फिर if Maruti comes and if Maruti sees कि हाँ this can be replicated at a lower cost, then the mass adoption might be possible, or फिर Maruti will just use their legacy and be the number one player. So as of now Tata with 1 lakh units, but आगे जाके जब करोड़ों की बात होगी तब पता नहीं कौन है. So after looking at the budget, even Anshuman is like karodo, yeah. So like as Shashank mentioned about the clean energy, let's move on to the next portion, which is the clean energy. Government बहुत सारे पैसा डाल रही है clean energy में, solar energy में. So like अभी इस जो बजट प्रेजेंट हुआ था उससे व्हाट डू यू फील कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन हो सकता है? किस चीज के बारे में? यार देखो, इंटेंशन तो एक चीज है, क्लीन एनर्जी यार इंटेंशन एक चीज है कि गवर्नमेंट रियलाइजेस कि गोइंग अहेड हमें ये ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना ही पड़ेगा. वी हैव नो अदर ऑप्शन. सो समवेयर और द अदर टू एनकरेज द सेम थिंग, दे हैव कम अप विद दीस कांसेप्ट्स ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स आ गए. प्लस गवर्नमेंट इज क्लियरली स्टेटिंग दैट गोइंग अहेड हम इन चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगी. सो दे हैव यूज्ड सर्टेन टर्म्स इन द एंटायर स्पीच एज वेल, जो कि क्लियरली डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट उन फ्रेंडली चीजों पे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी उस पे वो करेगा. तो कहीं ना कहीं फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, अगर स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल व्यूइंग दिस वीडियो आर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो उनके हिसाब से जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले जो काफी स्टॉक्स है जो धीरे धीरे, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ दोस थिंग्स, थोड़ा रिसर्च लोग खुद कर लेंगे, जिसके लिए अगेन आई नो तुषार किसकी बात करने वाला है. सो ये चीज है. so this is what I feel that ग्रीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है. और गवर्नमेंट ने क्लियरली एक चीज डिफाइन कर दी कि गोइंग अहेड मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स द डिपेंडेंसी अपॉन अ ट्रेडिशनल थर्मल एंड दीस थिंग्स माइट रिड्यूस. दिस इज समथिंग व्हिच आई फील ओवर हियर, क्रूड एंड थर्मल एंड guys it's time for a quick break. तब तक आप 1000 की वॉचिंग लाओ, आई विल जस्ट ड्रॉप द लिंक. 1000 की वॉचिंग ले आओ, वी विल ड्रॉप द लिंक. एंड इसी के साथ ही let's go on a quick commercial. पापा, अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे? अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. बेटा तैयार हो जाओ. देखो ना, फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. पापा, अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं
ट्रिप पे। अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ। डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। बेटा तैयार हो जाओ। देखो ना फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना। अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ। डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। पापा अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे। अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ। डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। बेटा तैयार हो जाओ। देखो ना फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना। अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ। डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। So guys, we are back and as promised, सबसे पहले मैं वो लिंक ड्रॉप करूंगा. So here is the link. Go get Tickertape Pro एंड अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड उनको पहले तो स्ट्रीम देखने बोलिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द फाइनेंस सेक्शन. यहाँ पे लाइक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का यहाँ पे था अदर देन द टैक्स एंड द क्रिप्टो. सो एज लाइक गवर्नमेंट आरबीआई ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके अपना डिजिटल रुपी बनाने वाले हैं. सो हाउ डिफरेंट एंड हाउ सिमिलर इट इज टू लाइक बिटकॉइन यू कैन से, क्योंकि बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड आरबीआई गवर्न करने वाला है, तो इट माइट बी इन सम वे सेंट्रलाइज तो रहेगा ही. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एंड हाउ डिफरेंट विल दैट रुपी बी? This is not like Bitcoin for sure. This Okay. is like a concept that was done in China and a lot of other countries as well, called CBDC, Central Bank for Okay. Digital Currency, where the central bank Okay. itself issues their own digital currency and they spread it across. And I think China started with ECNY, and it was a success there. And but only thing is they know literally kiska account mein kitna hai. That is a very very clear Okay. thing, which today, I mean, it's good in a way for the country to progress. But this is not new. It has been done by China and a few other countries, but it's very fast that India is adopting this, and I'm shocked. And I was very glad to hear that they're coming out with digital rupee. And I mean, it's a perfect time because I don't know when was the last time I keep a lot of cash in my wallet and pay through cash. Abhi to everything is UPI, digital payments, and having a central digital rupee is great. How does that integrate with all your payment apps right now going forward? And where do you buy this from is a massive question mark, but nothing that can't be solved. So yeah, it is good. It's very good. I look at it as Okay. financial inclusion. जहाँ तक banks नहीं पहुँचा with digital rupee, the government directly, the central bank directly can reach out. So let's say एकदम ही रूरल एरिया में किसी को सबको 500 रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना है. Now generally it will have like a lot of middlemen. Here it's like कि डायरेक्ट एक सेंड किया, it's in their account, it's in their wallet. So inclusion, that's what they also said कि inclusion के लिए. But yeah, this is 100% regulated. This is nothing like Bitcoin. But how ledger में हमेशा से आ Yeah, जाएगा. so it's not like crypto or Bitcoin. The only thing which I feel is so far those people who had fear कि यार digital currency में तो invest करना है, but Bitcoin तो खतरनाक है, crypto खतरनाक है. So now these people will have an option. But again, it's a regulated kind of thing. And as Shashank rightly pointed out, something similar to जो China में चीज हुई थी, this is more or less similar kind of thing. What I feel is कि government also had a point of FOMO that हमको भी अपना digital कुछ इस चीज पे लाना चाहिए, and then finally they decided to come up with this thing. So it's of course not at all like Bitcoin or something. It's just a digital formation. Okay. Of that. आई थिंक पहले भी जब गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आई थी ना, वहां पे गवर्नमेंट वांटेड टू से कि जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बिकॉज आप उसको करेंसी जैसे यूज नहीं कर सकते, एंड करेंसी इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज फॉर बिटकॉइन और मे बी इथेरियम. एंड नाउ
if something is coming from the government, RBI ही कुछ blockchain use करते हुए रुपी लाएगा, this will be in absolute term known as cryptocurrency. हो सकता है बाकी सबको क्रिप्टो एसेट्स का नाम दे दे, ऐसा कुछ चेंज आ सकता है. दिस इज माय स्पेकुलेशन एज ऑन डेट, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस कम्युनिकेशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, करेंसी वाली प्रॉब्लम जो थी वो इस पॉइंट से सॉल्व होती है. Yeah, so now it's a legal tender. It's not crypto anymore. It's just a digital currency. It's there's no cryptography involved. They're saying blockchain is going to be involved. I highly doubt that also. Even if a blockchain is involved, then it will not be a public blockchain, because then I know exactly how much RBI is minting, where RBI is transferring this money to, and also so when they launch something like this, when China launched this, they linked all the users to their mobile number, which is linked to their ID. So for us, I'm pretty sure it will be linked to Aadhaar, and everyone will know everything which is there. So it's like a good data asset for the government, because उनको exactly पता है किसका बैंक अकाउंट में कितना है. So if you're not, I mean, if you're okay with that, it's completely fine. But I don't think it'll be a public blockchain. They can use blockchain as the underlying technology, but public होना, you'll know exactly कितना mint और किधर गया है पैसा. So I don't think they would also want you to see all that. Okay, so let's move on to the telecom sector. यहाँ पे अभी 4G अभी थोड़ा recent ही है, and अभी 5G हो रहा है. तो don't you think 5G को इतने जल्दी लाना, it's too early for India, or like it's like what are your views on? They have to do it considering कि fiscal को अगर कहीं से match करना है ना, जो deficit होता है, तो कहीं ना कहीं these spectrum auctions actually help it out कि यहाँ से वो raise करके कुछ ना कुछ डेफिसिट को वहां से फिस्कल डेफिसिट को घटा सकते हैं. सो द पॉइंट इज ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट वांट्स टू गियर अप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर 5G आने के लिए. प्लस नेक्स्ट व्हाट आई फील इज बिकॉज सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली वेज थ्रू व्हिच फिस्कल डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट क्या है. एक तो मेजर चीज आती है टैक्सेस से, 80-90% तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है. दूसरा होता है डाइवेस्टमेंट से. डाइवेस्टमेंट पे तो अगेन 60,000 करोड़ बोल दिया है. तो तीसरा अब आपके पास ये ऑप्शंस बचते हैं थोड़े थोड़े वाले, एंड स्पेक्ट्रम इज वन सच वे. सो आई फील द इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस स्पेक्ट्रम थिंग वाज टू so like जब बजट की बात हो रही थी, there was no mention of BSNL. There was no mention of BSNL roles. तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई कर रही है, like Jio and Airtel? See, I think it will be too early to speculate about this. More than that, spectrum adopting new technology कोई भी जल्दी नहीं होती. जितना जल्दी करो उतना ही अच्छा है. More than that, इसकी जो फाइन प्रिंट्स आएंगे और जो एक्चुअल ऑक्शन होगा उसमें किस किस चीज के राइट्स दिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें अभी हमें क्लैरिटी आनी बाकी है. अभी आई थिंक इट विल बी टू अर्ली फॉर मी पर्सनली टू कमेंट कि ये स्पेक्ट्रम बहुत पॉजिटिव है या फिर बहुत नेगेटिव है. आई एम न्यूट्रल एज ऑफ नाउ, बिकॉज कई बार क्या होता है, स्पेक्ट्रम राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, टाइम का रिस्ट्रिक्शन लगता है, वॉइस कॉल वर्सेस डेटा सर्विस में कौन सा स्पेक्ट्रम वो पहले देते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगता है. सेम चीज हुई थी 2010 में भी, जब रिलायंस ने ऑक्शन जीता था. रिलायंस जियो ने नहीं जीता था, किसी एक दूसरी कंपनी जीता था जिसको रिलायंस ने एक्वायर कर लिया था. वो एक अलग कहानी है, किसी दिन और बात करेंगे. बट जब तक फाइन प्रिंट्स नहीं आते, इट इज जस्ट एन स्पेकुलेशन कि क्या होगा इसमें. बट इट्स ऑलवेज अ वेलकम पॉइंट टू अडॉप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी. ऑल्सो लाइक 4G से 5G सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ेगा इसमें, मतलब VR, AR, गेमिंग, ये सब का एक्सपीरियंस 5G में नेक्स्ट लेवल हो जाएगा. Yeah, and going ahead we have to, and the first question ना उस पे बस एक ऐड करने के लिए, when you ask कि 4G के बाद 5G इतने जल्दी क्यों आ गया, because if you see the pace at which technological adaptation is taking place year on year, उसका speed बढ़ना ही है. Like, and specifically अब आप खुद देख लो, a lot of things which we are going to adapt after let's say 7-8 years due to COVID, it was of course not that good, but उसके चक्कर में काफी चीजें speed up हो गई जो हम 8 साल बाद देखने वाले थे, probably we are seeing in the next 2 years. So speed up तो होनी ही थी sooner or later these things. Yeah. Okay, so let's move on to the last slide for this session, which is MSME. So इस budget से what do you think MSME को like what was there for MSME? According to me कुछ इतना ज़्यादा there was not that much, but startup से बहुत focus करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल. So like what's your take on that? I guess good steps in that direction. Of course बहुत ज़्यादा तो नहीं, but ठीक है, good ही steps है. Considering that the number of unicorns जो इस space में बढ़े हैं last year में, the rising number of unicorns, plus the government also realizes that
जो मुझे एक लगता है indirect way of generating more employment could be by providing better opportunities to MSME industries also, ताकि वो indirectly काफी job वहां पर job oriented बने और उस चीज को बनाए. तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी की गई है. प्लस जो एक एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, जो आपका थर्ड पॉइंट है, एग्जिस्टिंग टैक्स बेनिफिट्स वाली जो चीज है, रिडम्पशन ऑन टैक्सेस वाली चीज है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फ्रेंडली बना रहे हैं फॉर दिस थिंग. इनफैक्ट देवर सम मोर पॉइंट्स आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लिकेशंस जो टैक्सेस के रहते हैं काफी ज्यादा, उनको भी थोड़ा ईज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है फॉर स्पेसिफिकली एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए. तो एक तरीके से गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन दे रही है, एंड आई थिंक दिस इज अ वेलकम स्टेप दैट द गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट सूनर ये इस चीज पे हमको आगे बढ़ना है. सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. Okay. And like Shashank, like you are a co-founder of a startup. So what are like your views on the extension that the startups are getting for like 1 year, one more year? It's पहले very तो 3 difficult साल to था ही. even get that. It's very difficult to even apply for that and get that. It's not a very easy blanket thing saying आपको exemption मिल जाएगा. If you read the Okay. rules and regulations for Startup India का जो website पे है, it's massive. Out of I think some, I don't know the numbers, but someone told me this, that out of some 50,000 companies, only a few were given these exemptions, because you have to do something for social welfare. You have to be very unique in what you're building, and those type of companies get exemptions. Not everyone, because you're considered as a business, not a startup. I mean, आजकल business भी startup ही बोल रहे हैं अपने आप को, so it's not the unicorn के बाद भी they call themselves startup. But more interesting is the PVC investments that they're taking note of, because India में हुआ था बहुत. Last 2 years it has been a mad rally for all startups, which is again overvaluations on a lot of things. But also if you see जब exit होता है तो that company immediately externalizes themselves to Singapore, and then Singapore से exit होता है, and then they save a lot of money which never comes to India at all. So I think that you need to figure out how to either block them from going there, or do it in such a way that they come to India and they don't feel like itna mehnat like you should go to Singapore. So it's very easy to go to Singapore. Okay, guys. So let's take one quick break. This would be the last break of this session, and अभी जैसे ही break से वापस आएंगे, as promised, I will drop the final link for today's session, the final giveaway link, and let's like take a quick break. पापा अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. बेटा तैयार हो जाओ. देखो ना फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. पापा अब तो कपड़े भी प्रेस कर दिए, तो मैं गोवा जाऊं ट्रिप पे. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. बेटा तैयार हो जाओ. देखो ना फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना. अरे वाह, दिमाग ही लगाना है तो स्टॉक एनालिसिस पे लगाओ. डाउनलोड द टिकरटेप ऐप एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ. So guys, we are back, and जो link मैंने आपको promise की थी, that's in the comments. Go check like वो link देखो, आप link पे click करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, friend के साथ share करो, सबके साथ share करो. So this इसी के साथ we are at the end of the panel discussion, and there's one last thing that I would request Shashank to do. This question is for Shashank. I would want you to like give a comprehensive like takeaways, you can say takeaways of the budget according to you.
critical Okay. takeaways. So I'll be quick on this. So basically, just to sum everything up, it was a very okayish budget. It was nothing great, but nothing bad. So I would keep it at very neutral. And I think the market also reacted in that neutral way. It was a lot of emphasis on future, like for example, your drones, electric vehicle segment, infrastructure boom, which is great. So a lot of growth prospects happening. If you look at all of these elements, they were all growth prospects. Also, I feel the way they structure the budget, they're trying to put their stamp in the global arena also. For example, if you talk about clean emission, which they never spoke about in the last whatever decade that we were in, now everyone wants to go no carbon emission. A lot of companies coming out in statements saying we don't want this, we want to be a clean nation. And this is coming from the global pressure, I would say, right? So I think they're putting their stamp there. Launching a CBDC is again giving the global arena saying, boss, we are also here. So it's not only you guys, we are also reaching that developed nation wala mode. So it is good. I mean, overall, from that perspective, I can see what's happening there. So that's good. But for middle class and for middle class, I don't think there was anything really great. I think everyone's focused on the 30% tax on crypto. I think more clarity will come later on. You'll see a lot of financial influencers doing reels on it anyway. And I think overall it was okay. I mean, it was okay, nothing bad. But there are some small things. But again, it's a futuristic budget. So I would only assess, I think next year, after 1 year, we would be able to assess this budget very properly. Yeah. Okay, so that was it, guys. We are like at the very end of this panel discussions, and now we will take some questions from the audience, the live audience that we have, and we are going to give some Amazon gift vouchers as well. So let's see, audience, shoot your questions. We'll pick some few. I'm quickly dropping a poll in the comment section कि लाइव स्ट्रीम हमको वीकली बेसिस पे करना चाहिए, मंथली बेसिस पे करना चाहिए, आप बताइए. ओके, it's there. Okay, so this question is from Mohit Arora. एक what were the allocations जिसके वजह से जॉब बढ़ सकता है कंट्री में, is the question is asking. हेलो. या जॉब बढ़ना ना, देखिए डायरेक्टली ये नहीं बोला जाता कि हम यहाँ पे जॉब बढ़ाएंगे, पर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी है, बजट का जो एक्सपेंडिचर है 7.5 लाख करोड़, तो वो जब एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल बिल्ड होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड वाले साल में 2020-2021 में इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स सबसे ज्यादा रोड्स बिल्ड हुई है. रोड बिल्ड होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वहां पे आपको मिलता है, हर एक फील्ड के लोगों को मिलेगा, तो वहां से आपको इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिल सकता है. एक्सपेंडिचर जैसे से बढ़ता है, देखिए एक्सपेंस हमारा नॉर्मल मैथ्स है, किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, जब इकोनॉमी में ज्यादा खर्चा होता है तो किसी XYZ पर्सन की इनकम बढ़ती है. तो यहाँ पे क्योंकि खर्चा बढ़ाने की बात करिए तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी. तो एक एग्जांपल, अगर एक रेलवे स्टेशन भी बनता है और एक रेलवे स्टेशन को मेंटेन करने के लिए 10 से 20 जॉब्स क्रिएट होते हैं एटलीस्ट, तो वैसे ही अगर एक बड़ा सा हाईवे बनता है, उसमें देयर आर लाइक 1 टोल इन एवरी 10 किलोमीटर्स, उसमें 2 लोगों की जॉब लग गई. तो मतलब ऐसे तो बहुत जॉब बनेंगे. इनडायरेक्टली तो काफी जगह दिखा दी ना. फॉर एग्जांपल एक तो जैसे इन लोगों ने बताया इंफ्रा और कैपिटल एक्सपेंडिचर का वहां पर बन गया, उसी में काफी सारी चीजें बोली. फॉर एग्जांपल वो 400 न्यू ट्रेन्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स की जो बात करी गई थी, तो वहां पर भी वो बन गया. इनफैक्ट इवन द ईवी स्पेस जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो बिकमिंग अ न्यू स्पेस इवन इन स्टार्टअप्स. तो इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट हैज शोन various areas where plus agri tech की जो हम बात कर रहे थे, which Shashank also mentioned, so somewhere or the other this also can become a good space for employing new employment opportunities. And I think this budget and 1-2 साल last वो PLI की वजह से भी the government is actually promoting entrepreneurship. Like government wants कि हाँ नए लोग आए, businesses शुरू करे, taxation में भी relief है, तो देखते हैं. Okay, so
there's one question in the chat from Shashank Srivastav. He is asking salaried लोगों के लिए क्या मिल सकता है salaried लोगों को इस बजट से? सीधी भाई बात, तुम्हारे नो दुख बकवास दर्द अभी कुछ खत्म नहीं नहीं। होने वाले। सीधी बात, नो बकवास कुछ नहीं। लेट्स बी सरचार्ज मिलेगा, सरचार्ज। नहीं जेन्युइनली यहाँ पे हमें कुछ भी सैलरीड क्लास के लिए कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है कि हम लोग बहुत एक्साइट हो या खुश हो या हम वो डिस्कस भी कर सके। सो लेट्स बी ट्रू अबाउट इट कि नहीं था तो नहीं था। Okay. कुछ नहीं था। So guys, all my salaried fellow mates, आपके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था. We are very sorry. So let's move on to another question. Was there anything to promote green hydrogen production? Ankush is asking. I don't know if there was something specific with green hydrogen production. Green इसका था, but green hydrogen production I'm not very sure. Okay. सोलर पैनल्स के लिए था, But not very Hydrogen specific का- जितना मेरे को पता है. If Shashank or you may. Not sure. Not on hydrogen. So like there's one more question here. How union budget like how does the union budget stock will impact the stock market? Like अगर आज देखा होगा तो there was a lot of like ups and downs in the stock market. यार वो अप एंड डाउन किस लिए होता है पता है? देयर इज अनदर रीजन, बिकॉज एक तो बजट ये होता है, अनाउंस होता है, फाइन प्रिंट आने में टाइम लगता है. सो बाय द टाइम मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंज्यूम दैट, अच्छा इसका मतलब ये चीज होगी, अच्छा ये वाली चीज नहीं होगी, देन मार्केट स्टार्ट्स रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली. सो द रियल एक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे और कमिंग डेज. तो ये वाली चीज होगी. एंड कमिंग बैक टू दिस थिंग, इन द वेरी शॉर्ट रन आप डायरेक्टली देखोगे, बहुत ही शॉर्ट रन में डायरेक्टली ऐसा कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच अगर बजट पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है तो उसका होता है. फॉर एग्जांपल जब 26% का कॉर्पोरेट टैक्स लगा था कुछ साल पहले, तो उसके कारण रेवेन्यूज में इजाफा हुआ था, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स टू मेक गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स. So that helped indirectly to increase the market cap of a lot of stocks in the stock market. तो same wise direct impact नहीं रहता other than a few agriculture based stock या जो है जो directly dependent रहते हैं. तो मेरे हिसाब से as such इतना बड़ा कोई direct impact नहीं होता. And going ahead from the last couple of years, अगर आप देखोगे तो it's like जो बजट का ये वाला चीज होता है वो 2-4 दिन में पूरा प्ले आउट हो जाता है. आफ्टर दैट मार्केट अगेन स्टार्ट्स फॉलोइंग द फंडामेंटल्स एंड ग्लोबल क्यूज एंड ये सारी चीजें. सो दैट्स व्हाट आई फील. और वो जो 2-3% का अप और डाउन विद इन द डे होता है, दैट्स आल्सो स्पेकुलेशन ड्रिवन. या दैट्स स्पेकुलेशन. में हाउसिंग में ऐसा दे दिया, एक स्कीम दे दी, इसके वजह से हाउसिंग स्टॉक्स खरीद ले, सडनली हाउसिंग स्टॉक्स आर गोइंग अप, इंफ्रा इज गोइंग अप, बट इट्स ऑल वेरी सेंटिमेंट ड्रिवन आल्सो. एंड मोस्टली वो जो आप बोल रहे हो ऊपर नीचे ना, वो भी बहुत सारे स्टॉप लॉस एक तरफ के ट्रिगर हो जाते हैं सिस्टम बेस्ड, तो वहां पे धड़ाधड़ ऊपर नीचे होता रहता है. या यू आर राइट. Okay, so there's one more question. Darshan Heda. I am hearing my own echo. Okay. Darshan Heda has asked why FII, our brothers from Mauritius, always sell before budget. Why FI sell before budget? Yeah, this is the question. Yeah, I don't think so. That's a pattern to be talked about. मतलब it's not like FI sell before budget वाला scene होता है. My understanding says that I'll just put up an interesting fact over here before we move forward. For an investor perspective, a lot of people, if you go and check the statistics now, you would find that जब भी FIIs बहुत ज़्यादा बेचती हैं, now this is interesting, a lot of people get scared, ठीक है, but it has been seen in the next 1 to 2 years now, stock markets actually give good amount of returns whenever FIIs are actually selling left, right and all the wide. आप कभी भी देख लो 2008 एंड 9 में सबसे ज्यादा FIIs ने बिकवाली करी थी उस टाइम पे. उसके बाद वी ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. इवन 2020 के क्रैश के टाइम पे, इफ यू रिमेंबर, देयर वर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ FII सेल्स आफ्टर लेट्स से 8-9 साल बाद का सबसे बड़े फिगर्स आ रहे थे. एंड लाइकवाइज अगेन लास्ट 4 मंथ्स का देखे तो 80,000 करोड़ का कुछ आया हुआ था, 80-90,000 करोड़ का सेल आउट हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आपको वो स्कैर्ड नहीं होना चाहिए. एंड सेकंड, व्हाई डू दे सेल? आई गेस शशांक एंड
Anshuman would Okay, be in a better position to answer. I don't know, man. I don't think they sell. Even if they sell, I think it's just maybe to avoid this roller coaster of a volatile thing. But again, I don't have any It's not conclusive data. specific to budget, yeah. Yeah, I don't have any The last conclusive data. few weeks ka sell-off was because Fed saying that they'll double down on interest rates Exactly. going down. Yeah. So there were global and macro reasons because of which they sell. Yeah. Okay, so we can have the last question for today. Last question, and I'm like searching it. Come on, guys. थोड़ा एक interesting question लिखो. We will ask that, and we will end this session, and we'll be back with another. Hopefully next week or next month. We, according to the votes, 91% of people said that we should do these type of sessions more often. So we will. But अभी एक कोई interesting question पूछो. Okay. So, like as everyone knows, थोड़ा semiconductor का problem चल रहा है. Semiconductor industry में थोड़ा deficiency आ रही है. So, it wasn't in the budget. So, what are your views about that? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इतना बड़ा सप्लाई क्रंच है, उसमें गवर्नमेंट अगर इंसेंटिवाइज भी कर दे, ठीक है, बट अगर चीज मिल ही नहीं रही है तो क्या ही कर सकती है गवर्नमेंट. तो मतलब some things are not in your hand. This being one of them. I don't think it is a very big thing for them on the agenda list. Looking at the macro level, I don't think they would go so micro into something which is a current problem as opposed to a long-term issue. And government, as Anshuman mentioned, cannot cover everything right over in just a single budget. Yes. So, as Anshuman said, it's like some things are not in your hand, but one thing can surely be in your hands today. That's Tickertape Pro का subscription, guys. इसी के साथ जो लिंक है उस पे क्लिक करो, वो सबके साथ शेयर करो एंड टिकरटेप के प्रो सब्सक्रिप्शन का आनंद उठाइए. हम आपको मिलेंगे लाइक अगले स्ट्रीम में एंड वी विल हैव सम मोर गेस्ट इन एंड वी विल हैव सम मोर लाइक दिस टाइप ऑफ बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस. एंड टिकरटेप के चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभिषेक भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंशुमन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शशांक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीप फॉलोइंग ऑल ऑफ देम. दे really create a very like great content. And और क्या बोलूं मैं, टिकरटेप ऐप डाउनलोड करिए, म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर भी है, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब ऐप को यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब कीजिए. गाइस मैं और नहीं बोल सकता, प्लीज. ओके. सो आई एम हियरिंग माय ओन. हेलो. Okay, so this is it, guys. We'll be back with another and bye.